करना पड़ता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे फंसेगा। हमारे खिलाफ जब ये खेलते थे, हमारे तरफ से जब खेल रहे थे, मोस्टली टीम इनको ओवर द विकेट आके शॉट ऑफ लेंथ करती थी, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती थी जी। तो यहाँ पे किसी ने इनको इतना मार्क किया हुआ नहीं है। बिल्कुल सर। कैचेस विन मैचेस सर, अगर हम देखें इस्लामाबाद और कराची का भी जो मैच था उसमें इस्लामाबाद का आसिफ अली का जो इजी डॉली कैच रिजवान ने छोड़ा, उसके बाद मैच कंप्लीटली चेंज हो गया। इसी तरह अगर कल के मैच में भी हम देखें तो अगर पोलार्ड का कैच वहां पे पकड़ा जाता, सैमी और हसन अली टू फॉलो, इन्होंने इतना ज्यादा अभी तक एक्सपोज हुए नहीं है ये बैटिंग के ऊपर इस PSL में। क्या पता रिजल्ट डिफरेंट आ सकते, फर्क पड़ जाता है। कैचेस T20 में एक ऐसे प्लेयर का कैच छोड़ दें जो कि पूरा मैच चेंज कर देता है। उसको 1 या 2 ओवर चाहिए होते हैं। अमूमन अच्छे प्लेयर को 2 ओवर चाहिए होते हैं एवरेज को मेंटेन करने के लिए, नीचे डाउन करने के लिए। पोलार्ड ऐसा प्लेयर है जिसको 1 ओवर चाहिए होता है और उसने करके दिखाया है। 24 रन 1 ओवर में ले लें, अगर आपको 40 या 48 रन चाहिए 3 ओवर में, 24 रन कर लिए तो फिर खत्म हो गया ना मैच। तो कैच आपको बहुत कॉस्ट कर जाते हैं। एग्जैक्टली। ब्रेक के ऊपर चलते हैं एक, और उसके बाद फिर डिटेल में आके इनसे बात करते हैं। एक और बड़ा जबरदस्त कल मैच हुआ, बहुत बड़ा मैच हुआ जिसका सबको इंतजार था। पुलाव और बिरयानी का मैच हुआ, कराची और लाहौर का मैच हुआ। इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद वापस आके। डू नॉट गो एनीवेयर, प्लीज स्टे ट्यून बिकॉज आई हैव सर राशिद लतीफ विद मी। PSL ऑन है। Side, there's no fine leg, he's up inside the shot. What a good shot that is from him. HPL PSL is presented by Allied Bank. आपके दिल में हमारा अकाउंट। Sponsored by Head and Shoulders, Jazz Super 4G, दुनिया को बता दो। Tapal Danedar, Pepsi, Giggly Boom Boom, Tuck Bailu, and Jubilee Insurance. Co-sponsored by Pakistan State Oil.
got a wicket. Musa strikes. A wicket. Gone. It's his second wicket. And Musa is making inroad. And who was it? Is it? Oh, it's beautifully judged. Catch it is. Bowling. Brilliant. There's no stop. Oh, he's gloved it. He has gloved it and he's gone. This is a masterclass from Lamajani. Straight up in the air, man underneath it. Oh, what a cat! Picked up, man in the deep, and takes on. Nalbos was really confident that that was out. It's up in the air, and he's so up in the air, and
man in the deep and takes full toss, and he finds the man. Slow ball that's gone up in the air and it is taken. That's a good running catch. The ball. Is it a nick? Is it a nick? Bowling! Mohamed Amir gets it dead on. How well has he caught this? Not well enough for fancy. Straight down long off. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू PSL ऑन है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने राशिद भाई से एक सवाल पूछा, बिरयानी या पुलाव? सर, कराची वर्सेस लाहौर, कल बड़ा मैच, बड़े स्टेक्स, मजा आया देख के। बिरयानी का तो बात आप समझ रहे हैं, पुलाव का ये है कि लाहौर को कि पुलाव में थोड़ी सी मिर्ची डाल दो ना, वो उसको बिरयानी समझ के खा जाते हैं। तो कल मैच में भी इन्होंने ऐसी कोशिश की है, लेकिन वो उल्टा हो गया, क्योंकि मुझे भी ये था कि लाहौर की टीम स्ट्रांग आएगी, लेकिन वैसा नहीं आई। थोड़ा सा पिच का बिहेवियर कल आखिरी मैच में चेंज हुआ है जी। लो बाउंस एंड स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से हिट नहीं लग रही थी। दोनों टीम ने स्ट्रगल किया बैटिंग के ऊपर, तो जो टारगेट था वो इतना ज्यादा नहीं था, जिसकी वजह से कराची को आसानी हो गई। बिल्कुल। एक नजर डालते हैं सर फॉल ऑफ विकेट्स पे लाहौर की, अगर देखें तो ऐसा लगा कि पिच को मिस रीड किया इन्होंने। ये अच्छी स्पिनर ने शुरू में आउट किए, इमाद ने ये लकी विकेट भी अच्छी बॉल की, उन्होंने तेज बॉल की और कैच हुआ यहाँ पे। इसके बाद अगर देखा जाए, यहाँ फ्रस्ट्रेटेड नजर आए फखर। यहाँ पे इफ्तिखार को बॉलिंग करवाना ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी, लेकिन 2 ओवर कराए उन्होंने, 4 रन देके 2 विकेटें ली, उसके बाद इनसे बॉलिंग नहीं सर करवाई। अनलकी भी तो रहे ना, एबी डिविलियर का कैच भी छूटा है। हाँ, कैच तो छूटा है, लेकिन बॉलिंग तो और करवा सकते थे। फिर उमर ने बहुत अच्छी ये बॉलिंग जितना सेटअप किया इन्होंने कोरे एंडरसन का, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की। ये दूसरा अपने बॉल की है, यहाँ पे ये मिस्टेक कर गए थोड़ा सा, बहुत ओवर 3 ओवर बहुत थे इनके लिए। बिल्कुल। आमिर को इन्होंने गलत स्टॉक किया। यूजुअली वी डोंट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट विद एबी तो डिविलियर। यहाँ पे एबी का आखिर में आउट हो जाना कराची के लिए बहुत ज्यादा लकी रहा। एग्जैक्टली, अगर 10-15 रन भी ये एबी डिविलियर्स ऊपर से और ऐड कर सकते थे, जो कि आराम से कर सकते थे। एबी को पिच का आइडिया हो गया था, इसलिए वो आराम से खेल रहे थे कि आखिरी 2-3 ओवर में वो चार्ज करेंगे, 20-30 रन ऐड कर लेंगे। लेकिन शॉट ये मारते हैं अमूमन ये, लेकिन आमिर ने स्लो बॉल की, अगर तेज बॉल होती मैं भी करेक्ट हो जाती। एग्जैक्टली। दोनों फील्डर ऊपर दायरे में थे, पीछे कोई भी नहीं था, चांस अच्छा लिया था, लेकिन आमिर ने बहुत अपनी शार्पनेस का मुजाहरा किया और स्लो बॉल की है। बिल्कुल, लेकिन नजर आया कि वसीम अकरम और मिकी आर्थर ने काम किया लड़कों के ऊपर, जिस तरह फ्रस्ट्रेटेड नजर आए थे परसों ड्रेसिंग रूम के अंदर, जिस तरह बार बार चक्कर लगा रहे थे, तो पता चला कि इन्होंने काम किए, लड़कों से बात की है, टीम कॉम्बिनेशन भी बेहतर खिलाया, शिनवारी को ड्रॉप किया, समर्स को लेके आए, तस्मानिया से उनका ताल्लुक है। कल जो इनकी खेली है प्लेइंग 11 ज्यादा बेहतर थी, और 3 उन्होंने बैट्समैन एक तरह से खिलाया ओवरसीज, एक फास्ट बॉलर को लेके आए, क्योंकि अगर देखें शिनवारी और सोहेल दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करके खेल रहे थे, दोनों 40+ रन दे रहे थे, लेकिन कल उन्होंने एरन समर्स को लेके आए जो तेज हैं, उनको लेके आए और वो सक्सेसफुल रहे वहाँ पे। और फिर मिडिल ऑर्डर पे जिस तरह रवि बोपारा इनके पास मौजूद है, सिकंदर रजा मौजूद है, उनको नहीं खिलाया। इफ्तिखार लोकल प्लेयर पे बेस करना पड़ेगा, टीम वो ज्यादा जीतती हैं जो लोकल पे बेस करती हैं और उनको परफॉर्मेंस निकालना जानती हैं। कल का डे मैं समझता हूँ कि जो निगलेक्टेड प्लेयर है, डिस्कार्डेड प्लेयर है पाकिस्तान के, ओके 2015 में ओवल में अपना टेस्ट मैच खेला, उसके बाद से इनको इतना ज्यादा इनको मौके नहीं दिए गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी, चाहे वो T20 लोकल टूर्नामेंट हो, वनडे टूर्नामेंट हो या फर्स्ट क्लास हो, ये टॉप 3 में ही रहे हैं। 2017-18 का मशहूर सीजन जिसमें साद अली ने 900+ रन किए, सेकंड नंबर पे इफ्तिखार अहमद ने 735 रन किए, 2 सेंचुरियां की थी, 5 सेंचुरियां की थी।
हम मवाजना करते हैं कि 2 इनिंग अच्छी करने के बाद उमर अकमल की बात हो रही है कि आपको वर्ल्ड कप में होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उनकी भी होनी चाहिए, लेकिन उस प्लेयर को प्रेफर किया जाए जो डोमेस्टिक में तमाम फॉर्मेट में अच्छा खेल रहा है, और फिर PSL में भी आते ही साथ उसने अपना बॉलिंग के साथ भी और बैटिंग के साथ भी अच्छा परफॉर्म किया। तो इफ्तिखार ऐसा प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में रोक के भी खेल सकता है, सिंगल डबल भी उसके पास, और बड़ी हिट भी मार सकता है। तो कल बिलीव किया, पहली दफा कराची किंग ने इफ्तिखार पे बिलीव किया, क्योंकि ये 3-4 प्लेयर वो है, आमिर यामीन, सोहेल खान और इफ्तिखार, ये वो प्लेयर है जो मिकी के हाथों ही निकाले गए पाकिस्तान टीम से, और उनको फ्रेंचाइज ने लिया ये जानते हुए कि मिकी हार्टर ने इनको निकाला है। लेकिन बाद में साइज वसीम भाई वहाँ मौजूद हैं, कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं कि कोई बात आती ड्रेसिंग रूम से। लेकिन शुरू के मैचेस ना खिलाना इनको, मेरे ख्याल से 5-4 ओपनर जो खेल रहे थे वो मिस्टेक थी। प्लेइंग 11 टीम कराची की अगर देखी जाए बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन आप अगर प्लेइंग 11 ही ठीक नहीं खिलाएंगे तो बड़ी से बड़ी टीम हार जाती है। एब्सोल्युटली कल ट्रम्प कार्ड के तौर पे साबित हुए इफ्तिखार अहमद, और लाहौर को रिस्ट्रिक्ट किया 133 के ऊपर। उनके बड़ी क्रूशल 2 विकेटें की, 12 बॉलिंग कराई, उसमें से 9 बॉलें तो डॉट बॉल कराई उन्होंने। लेकिन अगर बात करें जब टारगेट चेज शुरू किया, ऐसा लगा इजी वॉक इन द पार्क होगा, स्पेशली जिस तरह कॉलिन मुनरो ने फखर को पहले ही ओवर में 14 रन लगा दिए, दूसरे एंड के ऊपर बाबर आजम भी इस वक्त स्टेबल नजर आ रहे थे, तो लग यही रहा था कि इजी चेज होगा। लेकिन उसको बाद में इन्होंने जिस तरह मैच को फंसाया है, लेकिन साथ ही क्रेडिट देना पड़ेगा लिविंगस्टोन को, अनस्टॉपेबल हो गए हैं बिल्कुल भी, और इतने लाइमलाइट में आते नहीं है यूजुअली, लेकिन इस वक्त टॉप स्कोरर अगर देखा जाए तो वही है, अगर हम नजर डालें लिविंगस्टोन की बैटिंग पे। नहीं, लिविंगस्टोन ऐसे प्लेयर है जो कि खुल के खेलते हैं, और ये बैकफुट पे इन्होंने यासिर को पीछे बॉल किए उन्होंने, और ये फिर बैकफुट पे यासिर को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया, पिच को रीड अच्छा किया इन्होंने, कहाँ पे पीछे जाना है। अमूमन ये निकल के ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, यहाँ पे वो बैकफुट पे रहे क्योंकि बॉल बैट के ऊपर नहीं आ रही थी, तो इन्होंने देखे स्विप भी शॉट सिलेक्शन अगर देखी जाए लिविंगस्टोन की बहुत अच्छी रही। हालांकि थोड़ा स्लो भी रहे ये बीच में, जब डेविड वीजे ने जो बॉल की है, मुझे हैरत है कि उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने चार्ज नहीं किया, किसी प्लेयर ने भी नहीं किया। वो ऐसे बॉलर हैं जिनको आप चार्ज कर सकते हैं। उन्होंने 24 में से 14 बॉल डॉट कराई हैं। तो ये वो ऐसे बॉलर नहीं है कि 4 ओवर अपने कंप्लीट कर सके, लेकिन पिच में कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से हिट प्रॉपर लग नहीं रही थी, जिसकी वजह से स्टॉप करना पड़ गया इनको। बिल्कुल सर, और अभी तक नजर भी यही आ रहा है जिस तरह लेकिन एक चीज और, कि फखर जमान का पहला ओवर करना वो मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने 12, 13, 14 रन दिए पहले ओवर में, वो भी एक क्वेश्चन आते हैं जहन में कि आप पहला ओवर क्या किया है, समझ के आया कि बाबर आजम बैटिंग कर रहा है, मनरो जैसा, मनरो के तो रन नहीं हो रहे, वरना 20-25 रन अगर रख देता पहले ही मैच में, मैच तो 2-3 ओवर में ही वो खत्म कर देता। दोनों नंबर 1 और नंबर 2 T20 रैंकिंग के बैट्समैन है, और आप फखर जमान इज अ वेरी आई वुड से पार्ट टाइमर, नॉट इवन यूज्ड रेगुलरली इन एनी मैच, तो वो थोड़ा सा चीज थी जो बैकफायर की। लेकिन थैंक गॉड जल्दी उन्होंने वापस रिकवर किया। लमी शानी ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग, 4 मैचेस के अंदर 3rd के ऊपर आ गए हैं, वो टॉप विकेट टेकर्स। 3-4 मैच कम खेले, 3 मैच शायद कम खेले उन्होंने, और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग जिस तरह कोयटा ग्लेडिएटर के टॉप ऑर्डर को उड़ाया था, और अच्छे प्लेयर को उमर अकमल को गुगली पे यहाँ पे एयर में डिसीव किया है इन्होंने, बाबर आजम को डिसीव किया। तो अगर बॉलिंग देखी जाए, रमेश ने इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में अगर देखा जाए राशिद खान के बाद मोस्ट एक्सपेंसिव जो बॉलर बन जाएंगे जी, वो रमेश ने बना। एक्शन भी दोनों का काफी सिमिलर है। लेकिन बात करें उसके बाद रिकवरी तो अच्छी हो गई थी, उसके बाद जो कमबैक किया लाहौर ने, हारिस रऊफ ने एक अच्छा स्पेल दिखाया, लेकिन उसके बाद जब इफ्तिखार है काफी क्रिटिकल और क्रूशल स्टेज आई वुड से, वहां पे लग नहीं रहा था कि इफ्तिखार इस तरह परफॉर्म कर जाएंगे। वही आपकी वाली बात है, देखिए ये इफ्तिखार सीजन प्लेयर है, लेकिन 10 साल से सीजन खेल रहे हैं, और स्कूल एंड काम, उनको पता था कि मैं आखिर तक रह जाऊंगा। देखिए गुड शॉट, क्रिकेटिंग शॉट मारी है उन्होंने, तो स्लॉगिंग नहीं की है, ये स्लॉगर नहीं है, ये प्रॉपर बैट्समैन है। बिल्कुल, ये बॉल मिली इनको, बहुत अच्छी लिफ्ट की है, और यॉर्कर्स बड़े अच्छे रोके इन्होंने। क्रूशियल टाइम पे इन्होंने रन बनाए, और कराची के लिए यहाँ पे एक बूस्ट मिला है कि उनके पास मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर है जो लोकल है, जिस पे बिलीव कर सकते हैं कि बॉलिंग भी कर सकता है। 2 विकेट ली है उन्होंने, विकेट ना भी ले 2 ओवर तो बीच में कर सकते हैं, लेकिन इमाद को थोड़ा सेंसेबल कैप्टनसी और करनी पड़ेगी। मैच जीतने के साथ साथ बंदा सीखता भी है। तो उमर को 10वें ओवर में आप लेके आए थे, वहां पे आप एक दायरे में ओवर कराएं, एक 7वां 8वां ओवर करवाएं, उसके बाद
क्योंकि वो 2 ओवर वाला बॉलर नहीं है, मेन बॉलर है कराची के, मेन प्लेयर्स को वो आउट कर, रॉन्की को 2 दफा आउट कर चुका है, डिविलियर्स को आउट, जो दुनिया के बेहतरीन T20 प्लेयर है उसको तो वो आउट कर रहा है, इसलिए आपको उसके गिर्द अपनी बॉलिंग को खिलाना पड़ेगा स्पिनिंग डिपार्टमेंट में। वेल ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। कराची का जीतना बड़ा जरूरी था, क्योंकि कराची में मैच हो और कराची ना हो तो वो थोड़ा सा अजीब देखने में लगा। लेकिन अगर हम आज के मैचेस के ऊपर राशिद भाई बात करते हैं, वी हैव गॉट अनदर डबल हेडर टुडे। इस्लामाबाद और पेशावर दोनों बहुत ही टाइट पोजीशन के अंदर है, दोनों बहुत तगड़ी टीमें नजर आ रही हैं, अब जाके दोनों फाइनली सेटल हो गई हैं, तो ये मैच बड़ा कांटेदार नजर आ रहा है। क्या अच्छा मैच है, दोनों 8 पॉइंट पे है और एक टीम 8 पे रह जाएगी, एक 10 पे चली जाएगी, तो यहाँ से अब वो टीम जो टॉप पे है 1-1 पॉइंट अपने 2-2 पॉइंट अपने लूज करेंगी। ज़ल्मी अगर जीतता है 10 पे चला जाएगा, या इस्लामाबाद जीतता है 10 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे किसी जो जीतेगा उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे कि वो प्लेऑफ में चला जाएगा, श्योर शॉट वो चले ही जाएगा। एग्जैक्टली अगर पॉइंट्स टेबल भी हम देखें तो ये नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई है, और काफी इंटरेस्टिंग इस टीम के अंदर स्क्वाड अगर हम देखते हैं, ल्यूक रॉन्की के ऊपर ओवर रिलायंस नजर आ रही है थोड़ी सी, उस इशू को कैसे ओवरकम करेंगे, क्योंकि इन कंपैरिजन अगर हम ल्यूक रॉन्की को देखें ना, मोस्टली जो लास्ट PSL या यहाँ इस PSL में मोस्टली उन्होंने जो रन किए हैं वो कराची किंग्स के खिलाफ किए हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को ये एंजॉय करते हैं, शायद इनको जगह मिल जाती है कट की, पुल की, और जो स्टाइल खेलने का है इनको बॉल उस रीजन में मिलती है। राइट आर्म फास्ट बॉलर थोड़ा फॉलो करता है इनको या रूम नहीं देता, वहां पे इनको इश्यू आता है। एग्जैक्टली और लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर हमने इनको स्ट्रगल करते हुए देखा भी है पिछले मैचेस में, तो देखते हैं वो पेशावर उसको किस तरह लेके चलता है, क्या इनको अटैक करने के लिए स्पिनर से जाते हैं, जैसे आपने पहले बात की डॉसन को इतना यूज नहीं करें, इनके अगेंस्ट अगर वो यूज करें, क्योंकि स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलते हुए अभी तक हमने देखा नहीं है। ये दायरे में डॉसन से बॉलिंग कराएंगे, क्योंकि लास्ट मैच में अगर देखा जाए डॉसन ने नई बॉल की है, तो रॉन्की के खिलाफ भी इनको ट्राई करनी चाहिए न्यू बॉल। वेल लेट्स होप कि आज कामरान अकमल से हमें जो रन्स की उम्मीदें हैं वो सारी निकल आए, वरना ये प्लेऑफ में जब आते हैं पेशावर तो डेंजरस, देखिए परफॉर्म नहीं कर रहे, 4-5 इनिंग्स हो गई उनकी, लेकिन वो जिस मैच में भी परफॉर्म करेंगे वो मैच वन साइडेड विनिंग ही होगी। जी इंपैक्ट प्लेयर्स होते हैं कुछ, जैसे शाहिद अफरीदी थे अपने टाइम में, शोएब अख्तर अपने टाइम में थे, ये मैच को वन साइड बना के चले जाते थे। कामरान अकमल, उमर अकमल ये भी इसी कैलिबर के प्लेयर्स हैं। लेकिन बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पेशावर भी शायद ओवर रिलायंस कर रहा है पोलार्ड के ऊपर, अगर किसी मैच में वो ना चल सके तो नीचे से आके एक्सीलरेट शुरू में अगर देखा जाए ना तो पोलार्ड की बैटिंग भी नहीं आई थी, इनके दूसरे प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, इमामुल हक ने परफॉर्म किया, उमर अमीन ने परफॉर्म किया, तो इनके पास प्लेयर ऐसे हैं कि वो अगर बैटिंग ना भी आए नीचे बैट्समैन की, ये टीम ऐसी है कि ये परफॉर्म कर सकती है। एग्जैक्टली लेकिन जो दूसरा मैच है आज हमारा शाम में, वो उन दो टीम्स के दरमियान है, जिसमें से एक टीम ऐसी है जो स्टार से लोडेड है, मैं बात कर रहा हूँ मुल्तान सुल्तान की, लेकिन इस वक्त नजर ये आ रहा है कि टेबल के ऊपर उनका सिवाय पार्टी स्पॉयलर्स के अलावा और कोई रोल नजर नहीं आ रहा। एट द सेम टाइम क्वेटा फर्स्ट पोजीशन एंजॉय करते हुए थर्ड पे गिर गया, कहीं ना कहीं गुस्से में तो होंगे वो भी। देखिए डिपेंड करता है, टॉस जीत के अगर दोबारा बैटिंग पहले आ जाती है क्वेटा की तो 50-50 चांसेस हो जाएंगे। वैसे कोई 2 मैच हारने के बाद मुल्तान सुल्तान को भी मौका है कि यहाँ मैच जीत जाए। पहले मैच की अगर बात करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड या उनसे कोई जीतता है वो 10 पॉइंट पे चला जाएगा, बाकी वो 8 पॉइंट पे एक रह जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अगर तो कोयटा हारती है वो 8 पॉइंट पे रह जाएगा, लेकिन 6 पॉइंट पे क्लाइम कर जाएगी मुल्तान सुल्तान, जो कि टूर्नामेंट के लिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कोयटा के लिए शायद इतना अच्छा ना हो, क्योंकि 4 मैच जीतने के बाद 3 लगातार हार जाएं तो मुश्किलात तो आ जाती हैं। बिल्कुल, और मुल्तान से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, इनके पिछले जितने भी पिछला जो सीजन था वो बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा इन्होंने एंड तक फाइट किया और अच्छा स्टेबल नजर आए, लेकिन इस दफा वो टीम के अंदर ना एनर्जी नजर आ रही है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी परफॉर्मेंस देखें, जैसे पहले एक मैच में विंस ने आके 80+ किए थे, आज भी अगर बैटिंग पहली है दूसरी है, चार्ल्स या विंस ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि एक 80-90 या 100 भी करते हैं तो फिर चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जिस तरह से वॉटसन है वो अगर इनिंग खेलते हैं तो 80-90 की इनिंग खेलते हैं, उमर अकमल है 60-70 की इनिंग खेलते हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअल जिसका मौका मिल जाए ना वो दूसरे की बारी ना आने दे। तो यहाँ मुल्तान सुल्तान को हम बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते अभी तक टूर्नामेंट से। ये इनको 1 जीत चाहिए, 2 जीत ऐसी टीम जहाँ पे मिलनी चाहिए थी, ये भी 8 पॉइंट पे हो सकते थे, लेकिन शायद इन्होंने वो स्ट्रेटेजी अपनाई नहीं जो दूसरी टीमों ने, जो किलिंग इंस्टिंक्ट होती है वो उनके पास मौजूद है।
आज का मैच जाहिर सी बात है, आज अगर हार गए मुल्तान तो फिर इनके चांस खत्म हो जाएंगे। तो आज अपना पूरा ये जोर लगा देंगे, पूरा जोर लगा देंगे, आज का मैच कोयटा से जीतेंगे। आखिरी कुछ मिनट रह गए, बस जाते जाते क्विकली आई विल टेक योर ओपिनियन ऑन इस्लामाबाद पेशावर, हु इज द विनर? इस्लामाबाद पेशावर, इस्लामाबाद लग रहा है कि आज, क्योंकि टीम इनकी डिफिकल्ट टीम है कि कोई भी एक परफॉर्म कर सकता है। हुसैन तलत ने 2 इनिंग में 0 कर चुके हैं, वो चाहेंगे करें। आसिफ अली थ्रेट है पूरे टूर्नामेंट में, हर एक के लिए आसिफ अली थ्रेट है। फ़हीम अशरफ इनके पास है, पाकिस्तान का ऑलराउंडर। शादाब इनके पास है, समी शायद वापस आए आज। तो टीम अगर देखी जाए इनकी सॉलिड टीम है। डेलपोर्ट इतना परफॉर्म नहीं कर रहे, 3-0 कर चुके हैं, उनके ऊपर भी ड्यू है, शायद वो नया प्लेयर अपना कोई लेके आए। लेकिन अगर देखा जाए इस्लामाबाद की टीम, इस्लामाबाद और शाम में कोयटा या मुल्तान? कोयटा वैसे नो डाउट अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो मुल्तान सुल्तान जीते हुए मैच हारी है, लेकिन टूर्नामेंट के लिए अच्छा होगा कि मुल्तान सुल्तान कम बैक करे, टूर्नामेंट अच्छा हो जाएगा। और बिल्कुल, मुल्तान हैज अ पॉइंट टू प्रूव, दे हैव गॉट loads of stars which are famous for T20 innings and T20 capabilities. Ladies and gentlemen, इसी के साथ आज के शो का टाइम खत्म होता है। राशिद भाई ने बोला इस्लामाबाद to win and Quetta to win, लेकिन we all know if Multan wins, tournament would still be wide open and there's still lots of crickets to be played. इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कुछ भी हो, PSL ऑन है।
should be out. And is. He's been... Will it go short again? And it's paid off. There you go. What a... Down the wicket and... Oh, another one. It's gone. Finds the dust. Hassan Ali. HPL PSL is presented by Allied Bank. आपके दिल में हमारा अकाउंट. Sponsored by Head and Shoulders. Jazz Super 4G. दुनिया को बता दो. Tapal Danedar. Pepsi. Giggly Boom Boom. Tuck Bailu. And Jubilee Insurance. Co-sponsored by Pakistan State Oil. Gone, he's got a wicket. Musa strikes. A win. Gone. It's his second wicket. Musa is making it run. And who wants it? Is it? Oh, it's beautifully judged. Gone big. Not sure how much he's got on this. I don't think so. Fielder underneath it. Takes the catch. Razan, as he picked this up nicely. No, he hasn't. He finds deep. Oh, hello. What about this? Catch and tip. Oh, is that a catch? Oh, it's a catch. Oh, that's gone straight up in the air. Man underneath it. Oh, what a catch. Picked up. Man in the deep. And takes on. Nawaz was really confident that that was out. It's up in the air. And it's up in the air. And Hello and welcome back to the HBO PSL 2019 Season 4. We are in Dubai. The weather in Dubai, well, we've got a very dusty weather out there, but you know what? Cricket goes on, and back in the Dubai International Cricket Stadium, we have a doubleheader coming up. So get set and ready for action as we take on a doubleheader. 2 games in today.
This is the weather out there today. That's our drone shot. You can see the stadium, and you can hardly see the buildings far in the back, you know. That's how it goes. It reminds us of the Mission Impossible scene that Tom Cruise had dust on here in Dubai. With that, I'm Fakhri Alam. You're watching the HBL PSL 2019 Season 4, and I have got a very special guest with me in the studio today. But before that, let me tell you about the two people who are always in the studio, even if you, well, let's not say. With me, of course, the two outstanding lefties, one a wrist spinner, the other the opening batter, Mr. Amir Sohail and Brad Hogg. Welcome, guys. And in between them is Stuck, Pakistan's national cricket team coach and the Karachi Kings coach, who's always on pins and needles these days, I see. Mr. Mickey Arthur. Mickey, welcome to the show and thank you for being here. My dear, pleasure to be with you all. Yeah, man, it's great to see you stuck between these two guys. What do you mean by this? We'll talk about that in a minute. And let's take a look at what's going on today, what is set up for us today. We have a doubleheader here now, and today we start off with Peshawar Zalmi clashing with Islamabad United, the defending champions. Peshawar Zalmi looking formidable and unstoppable at the moment, and that game starts at 3:30 p.m. local time. And then our second game for the day today is the Gladiators clash with the Sultans. Multan Sultans take on Quetta Gladiators, and with that, let's get going. Starting off with you, Mickey, how has this PSL been going so far, and what are your thoughts about the new talent that we're seeing here? The PSL is a fantastic competition. It really is. I think the key to the franchise competitions is the standard, and the local players that play in this competition are very, very good. And then you couple that with 4 overseas players, and you get a really good standard competition. And that's always been the thing for us is never compromise the standard, because the young Pakistan players are learning to play under pressure with some very, very good players. All right, let's talk about your equation with Wasim Akram. So you and Wasim, and we see some beautiful images every day, you know, with every game that the Kings are out there. How's the equation? And so what is it? Is it like is a good cop, bad cop thing that you guys pull with the players? Yeah, look, first of all, it's fantastic to work with Wasim. He's been brilliant, but not only just working with him, getting to know him as a person as well. It's been fantastic. We've had some wonderful experiences. We share a lot together. We're both extremely passionate. We're both extremely emotional. Oh, that just probably cost us a game. On your bird. we both live every ball. But more than that, we've had some fantastic cricket conversation as well. So it's been a fantastic association, and one that I've really enjoyed. Now this is a special moment right there, the big hug after the win. Yes. Much needed win. That was a change. Much needed win. Can I ask you something, Mickey? Can I have a look at your nails? You can, yeah. Oh, thanks, you're lucky star. You get them manicured, regularly. Otherwise, that's very good. I think that's a lot of marks there. Yeah, I think that's Mickey Arthur going. That's very intelligent, actually. Well, I'll tell you what, 2.5 very good years so far with Pakistan cricket have cost me my hair and some of my fingernails, but it's been a fantastic journey so far. Can I ask a question? Like yesterday, you were playing Lahore Qalandars, and you had Labuschagne there that was going to take the game away from you if he dominated. Yep. And then you had Babar Azam there trying to take him over cover in that situation. Now, before he went out there, did you discuss with your players, don't take him on, we can take the other bowlers on? We had, obviously, like most teams do, I would have thought we had quite a rigid planning meeting before. We had video footage of Lamachani. We noted that he had 3/4 of his balls had been leg spinners. We wanted to, had been the googly. Yeah. We wanted to play him as an off spinner if there was any doubt. And Bob is such a wonderful talent. He really is. He's a great player, Bob Azam. And people call him my non-biological son, which is right. I've got a very soft spot for Barber because I think he is such a good player. But last night I wasn't happy, and we had a discussion about it in the change room. Yeah. He was going beautifully. We knew Lamachani was the danger weapon. He told me he picked the googly, and I said, well, then you've shown him your stumps and you've tried to hit him through extra cover, which probably was not the option. So we did have a discussion about it. He said, but if I'd hit it, coach, you would have said great shot. I said, exactly, Bubs, but it was too high risk for that exact moment. Did he say he picked it? He missed it by 2 feet. He told me he picked it. Can I also tell you something? Because I was very next to the Qalandars dugout, and Lamachani had a fever, 101.6, 101.4, 101.5, which is varying. So he was coming in, bowling, going
field, as you must We have noticed seen. that. Yeah, we did. And he was wearing, he's been the fever in this Yes, he PSL. has been. And he was wearing a jersey, if you notice, there was a lot of tape. Their numbers were covered because they didn't have a sweater. He didn't have a sweater and he was feeling feverish and cold, so they gave somebody else's jersey and taped Excellent it up. effort. But even then, excellent. That's a lot of heart. But wow, he bowled really, really well. He did. He was Absolutely. fantastic. But generally you do perform better when you are under the weather as well, feeling ill. And I don't know what it is. You come to the studio whenever you have a flu, you sound better somehow. You always perform better, man. We'll get back to that one. You're starting to get ahead of yourself. I am. Let's talk about the new talent that we have on display here, especially the bowlers. We're looking at some really fantastic bowlers that are emerging on the scene right here at the event, and mostly fast bowlers. Yes. Yeah, look, the PSL does always throw out some really nice talent, and if you look through the history of the PSL, it's thrown up the likes of Hassan Ali, Shadab Khan, Fahim Ashraf, etc. They've all come through that, and there's some more young guys now making a mark. I mean, I love our little Umar Khan, our little left arm spinner's fantastic. Right on top there. That's 7 wickets he's taken. And then Harisov with 11. And then you've got Musa Khan also making an impression, and then of course Ibtisam, and then Mohammad Hassan surprised us all, especially Ahmed really took a liking to him and his speed, All of them are work in progress, but he's right. You have to focus on them, and if they are guided properly, they can be an asset for Pakistani team. Now let's talk about Umar Khan, the young little kid that you guys have. I mean, he's smiling all the time and not afraid to toss the ball, and he's been getting some dream wickets. The first one, AB de Villiers. He's been outstanding, and simply not just because of how he's the wickets and the success he's had, just around his attitude. He is from the very first training session. I hadn't seen this guy. He was picked through our talent identification program. He came in, he loved it, and the thing was, all our overseas players came in the first net and said, I can't get into this youngster. When I come down the wicket, he drags it short. When I go deep in my crease, he bowls it fuller. He said there's almost just an intuition to him, and he's been fantastic. I mean, just to see a smile on the face every day has been brilliant. He has been wonderful to watch. Absolutely. This was an amazing ball. Yesterday you got Corey Anderson out, absolutely bamboozled him. Got hit for 6 in that first over, and then went wider to him the second over, wider and wider. Yep. Was that him doing that himself, or was there a bit of a discussion with captain and coach? There was a little discussion, but he still had to go and execute that. And that's the intuition I talk about. He knew that he could go wider and wider. He varied his lengths. I don't know, you saw Anderson try and get back, try and cut one. He varied his lengths and eventually came down the wicket. It was a great piece of bowling. He was fantastic. Yeah, absolutely. He likes to fight. You could see after hitting the 6, look, he keeps there you go, you can see that. That's just the way he was. He enjoys the challenge. Since you're here, I want to take this opportunity. Every country aspires to win the World Cup, and World Cup is around the corner. Tell us about the progression of Pakistani team, and where do you think we need to improve to be a formidable unit for the upcoming World Cup? Look, where we sit at the moment is we've had the journey's been really good over the last 2.5 years. When we came in, we were 9th in the world in ODI cricket and struggling to qualify for the World Cup. Our emphasis went onto our white ball cricket, and we played a lot of younger players that some of them that came out the PSL. We've given them opportunities. We've been consistent with it, and we're hoping now that we get that reward come the business end, which is obviously around the World Cup. These guys have got a lot of game time into them now, and they're ready. And I think the key to that is getting game time into these guys under pressure, which they have had now, and I'm hoping that they come and deliver for us. So what are you going to do about you have a very strong bowling unit, but batting at times does not complement that bowling lineup of Pakistan's. What are you going to do about it? Because when you look at the PSL, you don't see many emerging batsmen who have solid technique and who you could actually rely on to win the game through intelligent cricket and batting. Yeah, that's a good point. And I guess that's the one thing with Pakistan cricket. And we've dug deep and we've had meetings. We're having a look at our talent identification pathways at the moment. We're looking to build a sustainable structure from the under-17s all the way through, so that there can be a progression of young cricketers. And I think that's the key. Batting is a worry. We don't see another young Babar Azam out there.
we see a dearth of bowlers. So we've got to almost skin the cat a little bit differently. Right. I think the team that attacks is going to win the World Cup. And I'm talking about attacking with the bowling options. Wickets through the middle are going to be crucial. We kind of went that route at the Champions Trophy because we had no option. If you say that the other teams are a 350 batting team, on our day we can get 350, we can get 320, but we probably about a 300 team. And we just have to make sure that we can defend whatever total we put on, or restrict the players. So particularly with wickets, so that when the guys get to over 40. Over 40 to 50 is where you get hurt in ODI cricket. But if they're 6 or 7 down at that point in time, they can't go hard enough. So that's got to be a strategy that we employ. And then henceforth, the last few runs that go, the bleed especially, you need to just try to make sure that you contain everything, and you need fit fielders for that. And fitness becomes very, very important. And you are especially very hard on fitness when it comes to the players. So how much of that is going to be an issue in the World Cup here now? Well, it's not an issue anymore. It's really not. The guys rock up, they fit, they know what the standards are. If you're not fit enough, you don't play in the Pakistan cricket team. It's as simple as that. We've got standards that we work through. You don't get to those standards, I'm afraid you don't play. That is first priority. Because it allows you to, when you get to 30, 40 in extremely hot conditions in Dubai, it allows you to go through and get the 80, 90s. You play in Abu Dhabi, we play on Dubai big grounds. You've got to be running 2s, 3s. Your running between the wickets becomes key. If you're not fit enough, you can't sustain that over a period of time. Comeback spells for bowlers. You know, we saw first spells were good, second spells were okay, third spells were only average because they weren't fit enough to continue that. Fit body, fit mind. And that's how we work. And it is a non-negotiable. And we are going to, and since it's non-negotiable, we will talk about that when we come back from this break. Since the yo-yo fitness test is very important, so is a break on our broadcast. We're going to take a break. When we come back, more with Mickey Arthur. Don't go away. एलाइड एक्सप्रेस घर वालों को पहुंचाए पूरी रकम। एलाइड एक्सप्रेस दुनिया भर से पाकिस्तान में एलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच से फौरी नकद रकम वसूल करें, वो भी बिना किसी कटौती के। एलाइड एक्सप्रेस, अपने प्यारों को भेजें पूरी रकम और पूरा खुलूस। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। चूंकि इंश्योरेंस आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ दे आपकी जरूरत के मुताबिक प्लान्स, पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी और इसके अलावा बहुत सारी सहूलियात। विजिट करें हमारी वेबसाइट। बेफिक्र मुस्तकबिल के लिए सिर्फ जुबली इंश्योरेंस। एलाइड सीनियर सिटीजन अकाउंट, इसमें है घर बैठे अकाउंट खोलने की सहूलत, हेल्थ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी, हाँ, और डिस्काउंटेड लैब सर्विसेज के साथ बेशुमार मुफ्त सहूलियात। एलाइड सीनियर सिटीजन अकाउंट, मेरा एतबार एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। कैरमल के अंदर भरा चॉकलेट, जब मुंह में पिघलेगा गिगल तो निकलेगा। गिगली एक्लेयर्स, चॉकलेट पिघलेगा गिगल निकलेगा। कंधे से बोझ हटा दे, जितना है जोर लगा दे, तू कौन है ये बता दे, आज पूरा दम लगा दे, तू बोझ हटा दे। आज हम जानेंगे कि यूथ को एक बैंक अकाउंट से क्या चाहिए। मुझे चाहिए फ्री इंटरनेट बैंकिंग, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होनी चाहिए, बस कैश ना कैरी करना पड़े। फिलहाल तो इंटर्नशिप चाहिए, किसी को भी पे करना आसान हो। मुझे चाहिए फ्री डील्स हर वक्त। एलाइड बैंक लाया एलाइड यूथ अकाउंट, जिससे मिले Pulse 365 डील्स, फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, फ्री माई ABL इंटरनेट बैंकिंग, वीजा डेबिट कार्ड, कॉर्पोरेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, पे एनीवन फंड्स ट्रांसफर फैसिलिटी और भी बहुत कुछ। एलाइड यूथ अकाउंट, यूथ के दिल की आवाज। हो जाए मुकाबला। एक को धोएंगे आपके पाउडर से, दूसरे को नए एरियल से। नया एरियल डबल एक्शन फॉर्मूला के साथ, जिससे ज्यादा हरे जर्रात सख्त दाग बेहतर निकाले सिर्फ एक धुलाई में। टाइगर का हर एक पैक दे आपके बच्चों को 20% आयरन और जिंक की ताकत रोजाना। टाइगर एनर्जी बिस्किट्स, एनर्जी भरा डोज हर रोज। जुबली इंश्योरेंस आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ दे
कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, फैमिली कवर, मुल्क भर के 400 से ज्यादा अस्पतालों में। इसके अलावा बहुत सारी सहूलियात। विजिट करें हमारी वेबसाइट। इज ऑलराइट, क्योंकि आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए जब आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो हम इसे निभाते हैं। बेफिक्र मुस्तकबिल के लिए सिर्फ जुबली इंश्योरेंस। Welcome back from the break, and what's going on there? That's Dean Jones and Darren Sammy. I wonder what's that. I think this is what is happening right now, ladies and gentlemen. They are before the Peshawar Zalmi Islamabad United match. I think Dean Jones' strategy is to take Darren Sammy out of the game. That must have been an interesting conversation. I don't even want to know what was being asked over there. Let's take a look at the points, how the standings are right now in the HBL PSL 2019. On your screens coming up right now, Dusty Dubai, and here's the HBL PSL standings. Right on top, Peshawar Zalmi Islamabad United at number 2. Quetta Gladiators are not glad because they were right on top and they're now at number 3. Lahore are at number 4. Kings have improved their position after yesterday's great game. And Multan Sultans somehow have navigated themselves right at the bottom of the table. That's how the points table looks like. And with us in the studio is Mr. Mickey Arthur. Let's talk about, before we talk about you, we were talking about Umar Khan's positive attitude and we were talking about fitness and all that and everything. And talking about Umar, there is another Umar who's been knocking on the door and saying, hey, look, my fitness has improved and look, I'm batting more responsibly. My attitude has changed. What do you say to that, Mickey? I think, he's played exceptionally well. He's come in, he's played well. We all know he's a talented player. Yeah. Umar Akmal's an incredibly talented player. Hits the ball well, hits the ball hard. He's a good fielder. He ticks a lot of boxes for us, particularly with our one-day squad, looking for a finisher at sort of number 6. He ticks all the right boxes. He knows where he stands. Right. He knows exactly where he stands. Yeah. I actually had I actually had a meeting with him the other day. We had a serious conversation. Yeah. And we discussed his cricket. Oh, that's I want to see him continue. I think Inzi and myself both want to see him deliver those match-winning innings. We want to see him finish games. I think that's really important. It's not about a quick-fire 30 and then that's good enough. That we live by. Then he puts himself in for selection, and then Inzi, myself, and the selectors then can make a decision on him. That's awesome. That's great stuff. Thank you. Now let's talk about Peshawar Zalmi, the Yellow Storm. And in that Yellow Storm is that huge pillar, monumental figure of Pollard. What do you think about him? I mean, look, it looks like he's found his touch and he's going at it everything, even yesterday's innings. I just thought, you're going to ask him about Pollard. Does he have a chance to feature for Pakistan? No, that's not that. Can we get him in quick? That's not going to happen, right? Yeah. So Pollard's played brilliantly. We've seen him finish games there for Zalmi. I think he's done it twice now, both against Multan actually. But he's finished the game off. That is the type of finishing we want a guy like Umar Akmal or whoever finishes for Pakistan to do. Obviously Pollard's got all the attributes. He's got the power. He's got everything. But we want to see our players, our Pakistan players, doing that finishing role for us under pressure in big games. But this is another point you brought up with Pakistan. Bowling, defending, getting wickets in the middle periods. This is where Peshawar, Islamabad have to be smart tonight and get the right combinations when he comes in. They can't have Patel bowling to him. He'll just smoke him out of the park. I think Shadab's got to bowl the first over to him, beat him with the wrong one. I know Shadab got hit for 4, 6, 4 last game, but he